Hi all, I hope I am audible. Kindly confirm the audio and the video. All students. So we were talking of ocean salinities. Any questions on that? Welcome back to oceanography class. Welcome back to oceanography class. And we were talking about ocean salinity, global salinity. Any questions on that? Let me see if any doubts. Any doubts related to the topic, or probably if you're doing physical recorded क्लासेस तो उसके बारे में भी अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं क्विकली 1 minute and then we'll continue. Everyone, there's this student who's asking, Ankit is asking why Dead Sea has such high salinity. So everyone, is the answer written? And Ankit, did you look at the atlas? Where is Dead Sea located? ये तो जीएस का है. अंकित आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं? In low latitudes, more saline than open sea. When we are talking comparing that, so in the lower latitudes, because high evaporation, land meets faster, less river influx, parts in arid and semi-arid. So कहाँ पर है डेड सी आपको पता है? एंड अंकित, इफ यू डू नॉट नो अबाउट डेड सी, तो यानी लेक वन और लेक उर्मिया का तो आपको पता ही नहीं है. अंकित आप तो पुराने बैच के लग रहे. लुक्स लाइक सर टुडे आई लुक एट एटलस. अंकित क्लास के स्टार्ट में ऐसा बोल रहे हो, दैट शोज कि ज्योग्राफी कुछ आ नहीं रही है भाई. So it was the last point. So not a very good state to be in, Ankit. Let us not disturb the class. ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही एलिमेंट्री चीज़ है कि भाई जहाँ पर वो हैं आपके सांबर, मैंने तो यहाँ पे डाला नहीं, मैं इसमें बहुत अच्छे से डाल सकता हूँ. इंडिया में भी तो डल सकता है ये. इंडिया, राजस्थान लेक्स, राजस्थान लेक्स, सांबर, दिगाना, दीदवाना,
एटसेट्रा, ये सब यहीं पर है। तो अंकित आप कह रहे हैं आई लुक एट एटलस टुडे दैट शोज, और पुराने बैच है ये। अनुराग सुमन रोशनी सिंह, न्यू बैच और ओल्ड बैच? मैं पूछना चाहता हूँ, कई बार मुझे ही नहीं पता रहता है, न्यू बैच और ओल्ड बैच? रोशनी सिंह, अनुराग सुमन, अभिषेक, नितिश, आई कैन सी योर नेम्स, इसलिए मैं कह रहा हूँ ओल्ड बैच। अंकित यार बड़ी गड़बड़ है यार, ओल्ड बैच के स्टूडेंट हो, तुम्हें यही नहीं पता है कि यार ये कहाँ पर हैं और वो है, आपने मैप भी नहीं देखा। So I hope others are not in this thing, because see, teachers are teaching the same students, but ऐसा नहीं है ना कि सभी लोग रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि इसको ये कैसे समझ आया होगा जब इसको यही नहीं पता कि यहाँ पर रेड सी है, रेड सी यहाँ पर है, और लेक वन टर्की में है, और उर्मिया ईरान में है। इसको यही नहीं पता चला है कि यहाँ पर मैक्सिमम है, देखिए यहाँ पे 37 भी लिखा हुआ है। सो बोल रहे कि मैं जाकर एटलस में देखूंगा। सो अगेन दैट रिमाइंड्स मी, ऑल स्टूडेंट्स, नॉट एवरीवन हु इज टेकिंग ज्योग्राफी will be able to optimize geography. Sometimes you will get this feeling, or you know, some people saying अरे ज्योग्राफी में स्कोर नहीं आता, यहीं पर बैठे हुए आप ही के साथ बैठे हुए। ओल्ड बैच ऑलमोस्ट 1 year, ओल्ड बैच ऑलमोस्ट 1 year आफ्टर टीचर हैज एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, दैट ये ओपन सी के मुकाबले, compared to the open sea, these enclosed seas in the lower latitudes will have higher salinity and in the upper latitudes will have lower salinity, लिख के भी दिया है। That's one thing, एक तो वो हुआ, और दूसरा मतलब the most popular example of inland sea, popular example of inland sea, Israel Jordan border in the desert region, ये तो जीएस वाले को पता है। सो अंकित, वेरी वेरी डिमोरलाइजिंग फॉर द टीचर, बट दैट्स ओके। मैंने कहा ना, थोड़ा सा मुझे अपने इमोशंस कट करने पड़ रहे अभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ। द टीचर हैज़ टू कट डाउन द इमोशंस एंड द एक्सपेक्टेशंस। इट्स बेटर, यू नो, पुराने मास्टर स्ट्रोक के जो एग्जाम्स दे भी रहे हैं, दे कीप ऑन सेंडिंग अस पेपर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। आज ही मैं सुबह किसी का आंसर्स चेक कर रहा था, एंड अमेजिंग वर्क भाई। सो वेरी वेरी डिमोरलाइजिंग अंकित, डोंट डू दैट। ठीक है बेटा, पढ़ाई करो, और बाकी आप सीरियस हो नहीं सीरियस हो उसकी वजह से बाकी लोग क्यों सफ़र करें। सो लेट्स नॉट डू दैट। हाँ जी, तो हम कहाँ पर थे? वर्टिकल वेरिएशन ऑफ सैलिनिटी, वर्टिकल वेरिएशन ऑफ सैलिनिटी। फिर से कह रहा हूं, जो भी लोग यहां पर बैठे, न्यू और ओल्ड बैच, मेक श्योर यू रीड एनसीईआरटी। ये भी दिखाता है अंकित, कोई एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ा, कल भी रिक्वेस्ट किया था एनसीईआरटी जरूर पढ़ो, इसका बेसिक एनसीईआरटी। सो एनीवन हु वांट्स टू स्कोर इन एनी एग्जाम, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और एनीथिंग वेयर ज्योग्राफी इज इन्वॉल्व, क्लास 11th एंड 12th की ज्योग्राफी तो चाहिए। एंड इफ आई वाज टॉकिंग टू अ जीएस बैच, ठीक है, आई डोंट पुश। ऑप्शनल वाले को नहीं आता तो ये स्थिति हो जाएगी भाई जो अंकित की हुई है। ठीक है, डोंट डू दैट, इट्स अ वेरी शेमफुल सिचुएशन। हाँ जी, तो हो गया वर्टिकल वेरिएशन ऑफ सैलिनिटी। तो हमने वर्टिकल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर देखा था, तो उसके लिए क्या बनाया था? ऐसे बनाया था, है ना? सरफेस, सरफेस, तो सरफेस पे हमारे पास सैलिनिटी है, सैलिनिटी, एवरेज सैलिनिटी। सो व्हाट वी आर लुकिंग एट इज, as one goes deeper, the salinity changes. Why will it change? Why will it change? Again the same things, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, जो फैक्टर्स बताए थे वही था। salinity, addition of water, removal of water, mixing of water, addition of water, removal of water, mixing of water, that's it। ठीक है, जो पिछले कॉन्सेप्ट्स कराएं दे विल कंप्लाई। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, एज यू गोइंग इन डीपर लेयर्स, if more ice is melting, some more water is released over there, what will happen? Salinity change हो जाएगा। if some water is getting consumed in making what, in making ice, so वहाँ पर क्या होगा? water तो चला जाएगा, salt रह जाएगा, so what will happen? Salinity will increase। So in addition of water, removal of water, even in deeper layers will change it. Apart from that, there can be mixing. Remember, currents can happen.
कई बार क्या होता है, द वाटर फ्रॉम द बॉटम इज कमिंग अप, water from the bottom is coming up, that is called upwelling, so that can also cause mixing. Is everyone okay with this? पहला तो आपका ये हुआ. अब दूसरा ये है कि how does it change? So what was happening to the temperature? Quickly tell me, general trend, what was happening to temperature with depth? पानी में as the depth was increasing, what was happening to the temperature? तो जैसे जैसे अंदर जा रहे थे, temperature was generally reducing. Though we had to see the latitude, it generally decreases. तो नीचे पानी ठंडा होता है, क्या टेम्परेचर होता है? अराउंड 2 डिग्रीज, 1.6 डिग्रीज. सो दिस इज वेरी कोल्ड वाटर, 2 डिग्रीज और 1.6 डिग्री सेल्सियस, ऐसा हमने देखा था. नाउ वी लुकिंग फॉर सैलिनिटी. हाउ डज इट चेंज? सो एवरेज सैलिनिटी, salinity 34.7, yes or no? Say for example, in tropical belt, subtropical belt, what do we have? Maximum salinity कितनी होती है, जल्दी बताओ. मैक्सिमम कितनी होती है? Remember we said it will peak in the maximum region, it will touch to some value. सर वहां 36 हो सकती है, 36 possible, remember? Okay. Say for example, I'm looking at in higher latitudes. कल जो हमने किया था, say for example, I'm talking about 60 degrees north or south, क्या salinity होगी? Can anyone tell me? Salinity, we are talking about salinity. Higher latitudes. ओके सर, यहां कम हो जाती, 34 हो जाती, 34. So this is what? Surface. Now what is trends as the depth increases? Yes. First is this layer, the top layer. This layer is the top layer. So top layer पे what should be the salinity? What should be the salinity in the top layer? Any guesses? What should be the salinity of the ocean in the top layer? ऊपर के लेयर में salinity क्या होना चाहिए? What should be the salinity in the upper layers of the ocean? So it should be same as surface. Why? It should be same as surface. Why? Same as the surface. Same as surface. Quickly think about it. Why? Can I say mixing? Too much of mixing is happening. So Pawan is writing high. क्यों भाई? यही चीज तो उसमें भी करवाया था. पिछला पढ़ दो पवन या नहीं पढ़ दो? पिछले में क्या कहा था? होमो थर्मल. तो यहां क्या होगा? होमो हेलाइन. ऊपर का तो सेम ही होगा ना. Whatever is on the surface, we said that the top 100 meter does not get anything. Same process will apply here also.
So there is not going to be any change. Is everyone okay with this or not? So पहला तो आपको ये समझना पड़ेगा कि there is not going to be any change. Now at the bottom क्या होगा? At the bottom क्या होगा? What do I expect at the bottom? ओशन के बॉटम में क्या सैलिनिटी एक्सपेक्ट करूं? कुछ लॉजिक लगाना है. वंस यू पुट योर लॉजिक यू विल स्टार्ट सीइंग कि अच्छा यार ये तो इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है. क्विकली ओशन बॉटम, अगेन हाई. अरे हाई क्यों? सब जगह तो सेम ही है. डिड वी नॉट से कि पूरे के पूरे ओशन में एवरीवेयर द सैलिनिटी इज मोर और लेस द सेम? सैलिनिटी यहां पर मोर और लेस 35 के आसपास आ जाएगी एंड कांस्टेंट. सर ऐसा कैसे सर? आपने कब बताया? ये बताया था. डिड आई नॉट ड्रॉ दिस डायग्राम इन द लास्ट क्लास? ऐसा कुछ बनाया था कि नहीं बनाया था? तो कहां पर ड्रामा होता है? यहां पर ड्रामा होता है. मोस्ट ऑफ द ड्रामा हैपन्स हियर. दिस इज सर बट ये तो टेम्परेचर के लिए था. सैलिनिटी विल ऑल्सो रिमेन द सेम. नो, हायर में यहां पर आपका कितना हो गया? 34 ऊपर सरफेस में. तो डीप में तो इट इज द सेम थिंग. 35 जो हमारा एवरेज है उसके आसपास आ जाता है. तो मोर और लेस 35 रहता है. मोर और लेस 35 और 34.7. तो यहां पर ये जो हमने बताया था नीचे का पानी भी 34.7. सो कैन आई से ग्लोबल एवरेज. ठीक है, एवरीवन विद मी ऑन दिस? तो एक काम करते हैं, एक प्लॉट बनाते हैं. लेट्स कीप दिस एज 35. ओके, let's keep this as 35, 35.5, 36, 6.5, 37, 34, 33. Yes. And let me take the curve. Let me take the curve of, कहाँ का ले लूँ everyone? If I take the water from here, what is Atlantic Ocean? Tropical Atlantic water. क्या salinity है? Tropical, subtropical, Atlantic water. What is the surface salinity everyone? Say 37. ले लें 37. I'm taking this place. So where would 37 be? 37 would be here. 20 to 30 degrees north or south Atlantic Ocean. चलेगा? Everyone with me on this? And what will be the salinity? Salinity will remain the same. Salinity will remain the same. More or less it is going to remain the same. True? अब एक और काम करते. Let us take salinity from here. कहाँ से ले? इधर से ले ले. यहीं पे ले ले. Atlantic Ocean. Atlantic Ocean इधर. Around 60 degrees. How much is this? Labrador Sea के पास 33. Is it okay if I take higher latitude? ये 33 आ गया. ये कहाँ पर है? Nearly 60 degrees north Labrador Sea. Everyone, will it remain the same? Will the salinity remain the same or not? और बॉटम पे कितना है? बॉटम पे ये
bottom पे it should be somewhere here. So bottom salinity is somewhere here. This is the bottom salinity. Can I say ऊपर और नीचे? The salinities are different and they have to match. The curve has to join. How do I join the curve? I'm saying if they ask you a question looking at the curves, that what will be the salinity at depth? Examine the salinity variation with depth. What will your answer be? What will your answer be? If the question is examine the salinity with depth. Quickly, everyone. Homohaline. Yes. Second layer. Second layer. Rahul is saying, sir, it declines. Everyone, my question is what happens to salinity? If you get a question on what happens to salinity with depth, what will your answer be? What would your answer be? So salinity at depth is very much. I'm asking you, Sakshi, question hai, what will happen as one goes deeper into the ocean? What will happen to the salinity? Answer batao. ये मत बताओ कि नीचे fixed है. What will be happening to the salinity? What will happen quickly? So the graph is in front of you. इसी को तो बताना है.
At higher latitude, it increases. In upper latitude, something. In lower latitude. साधना यादव कह रही हैं डिक्रीज डिक्रीज. अरे भाई पवन भाई, साधना जी, आपके सामने इसको इंग्लिश में बोलना है. कैन यू नॉट सी कि यहाँ पर अगर इसको ए कहा, इसको बी कहा, इसको सी कहा, what is wrong with Pavan and Sadhana? Would you not say that with depth up to 200 meters, salinity remains the same? In the warmer latitude, the salinity reduces in the halocline region, then it again becomes constant. However, in the upper latitudes, in the higher latitudes, the salinity after remaining constant for 200 meter begin to increase and then it becomes this thing. राहुल यादव होमो होमो होमो. अबे आंसर लिखेगा कांस्टेंट, इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट, ये लिखना है. जोन ऑफ रैपिड चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज एज पर लैटिट्यूड, ही आएगा. Wenck is writing salinity increases for higher and decreases for lower, and after 1000 meter it becomes more or less constant. ही तो लिखना है. This is why some people pass, some people fail. Sir, uniform, steep change, then constant. तो change भी तो बताना पड़ेगा. Which direction is the change? Whether it is increasing or decreasing. After 1000 meter depth, entire ocean is a huge water mass with nearly same constant salinity. 34.7 के आसपास आ जाएगा. अच्छा, यही तो बात हो रही है. ये सरफेस हो गया, सरफेस के 200 मीटर, बीच में फिर क्या आ गया, थर्मोक्लाइन एंड नॉट थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन. इसको हम हेलोक्लाइन बोलते हैं, हेलोक्लाइन. इतनी सी बात है यार, नथिंग एल्स. जब भी वर्टिकल आएगा तब भी वही आएगा. इवन हमने उसमें यही किया था, व्हेन वी डिड टेम्परेचर, तब भी तो डिफरेंट एरियाज ले लिए थे. इक्वेटर का टेम्परेचर 27, 20 डिग्री का टेम्परेचर 23, 40 डिग्री का टेम्परेचर 13 एंड और 14 और समथिंग, 60 डिग्री पर 1 किया. दैट्स ऑल. ये तो पहले कर चुका हूँ, उसी को दोबारा कर रहा हूँ. एंड देन पीपल आर फाइंडिंग इट स्ट्रेंज. दैट शोज यार कुछ रिविजन नहीं कर रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो. इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, इसी को मैं चेंज करता हूँ. सी, अ फनी थिंग विल हैपन. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियानिक डेंसिटी. अभी तो मैंने सैलिनिटी का, इफ इंस्टेड आई हैड यूज द वर्ड डेंसिटी, अगर सैलिनिटी की जगह मैं डेंसिटी कर देता तो क्या हो जाता, तो भी ये रहता. एवरेज ओशन डेंसिटी, एवरेज ओशन डेंसिटी is 1.025 gram per centimeter cube or 1025 kilogram per centimeter cube. सेंटीमीटर, मीटर हो जाएगा, सॉरी, उसको किलो में किया ना. ये कर सकते. व्हाट विल हैपन टू द डेंसिटी, सोच के बताओ. डेंसिटी को क्या होगा, as one goes deep inside, what will happen to the density of water? So density
एज वी गो इन द डेप्थ इट विल डिक्रीज. आप सब लोग बताइए डेंसिटी क्या डिक्रीज होगी एज यू आर गोइंग इनसाइड? सोचने की बात है. एवरीवन थिंक अबाउट इट. मैं तो साइंस का स्टूडेंट नहीं लगता है. आप एक बात बताइए, व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ द लेयर्स ऑफ वाटर, सो अंदर जाने पे डेंसिटी कम होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए? कम होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए. ये कह रहा है डिक्रीज हो जाएगा. कैसे हो जाएगा? कोई पता नहीं. अपने ही मजे में चल रहा है, कुछ नहीं कर सकते. ये आपका सरफेस, ये आपका सरफेस. 1025, 1050 एंड 1020. ठीक है, इधर को बढ़ रहा है. गेट दैट? या इसको पॉइंट में डालेंगे तो पॉइंट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं. सो ओशन का कितना होता है एवरेज? तो जो भी है ऑन द सरफेस इट विल बी डेंसिटी का कर्व अगर मुझे बनाना है, ऐसा होता है. पहले सेम रहेगा, फिर कम होगा. डेंसिटी इंक्रीजेस विद डेप्थ. सिंपल. सेम बनेगा, सब सेम बनेगा. अगर किसी को करना आ गया तो जॉब डन. सब कर्व सेम है, सब कर्व सेम है. इसमें सरफेस का कितना हो गया? मे बी 1020. सरफेस है, गर्म सरफेस है. दैट्स इट. एंड देन इट गोज, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. दिस इज 25, दिस इज 30, दिस इज 40, और यहाँ पर 50 आ रहा है, और नीचे कांस्टेंट हो जाएगा. तो salts become constant, the temperature becomes constant, the depth, the density also becomes constant with depth. That's your density curve. सारे कर्व ऐसा दिखाई देते हैं. यस. तो जो लोग शराब पीते हैं, तो शराब में कॉकटेल होती है एक ड्रिंक, इसका ग्लास ऐसा दिखाई देता है. इसको बोलते हैं मार्टीनी. क्या बोलते हैं? मार्टीनी. वो ग्लास मंगाएंगे तो शराब इसमें भर के देता है वो. आपने पिया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिल्म में देखा कभी ऐसा? इसमें क्या हो रहा है? एक इधर से आ रहा है एंड देन दिस थिंग. सो डज दिस लुक लाइक अ मार्टिनी कर्व? लुक्स लाइक अ मार्टिनी ग्लास. तो सैलिनिटी का कर्व कैसा दिखाई देता है? विद डेप्थ, मार्टिनी कर्व. सो मेनी वेज इन विच वी कैन लुक एट, so many ways in which we can look at things. Is everyone okay with this? तो आपको वर्टिकल वेरिएशन ऑफ सैलिनिटी भी आना चाहिए. Polar increases, tropical decreases, surface layer homohaline, after that homo thermocline, नहीं halocline, sorry, halocline, and it will go down, it will go down. Depends किसका है ये. इतना कर्व किसका होगा? इफ इट इज टू सॉल्टी, इफ इट इज टू सॉल्टी. कम सॉल्टी होगा तो कम कर्व बनेगा. सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट.
ये आपका वर्टिकल वेरिएशन ऑफ सैलिनिटी, वर्टिकल वेरिएशन ऑफ सैलिनिटी एंड वर्टिकल वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, यही आपने किया. हाउ डू यू मेजर टेम्परेचर? सी का टेम्परेचर, हाउ टू मेजर how to measure the density. कैसे मेजर करते हैं? हाउ डू यू मेजर सी टेम्परेचर, हाउ डू यू मेजर सी डेंसिटी, कैसे मेजर करते हैं? जल्दी बताओ, सोच के बताना जल्दी से. व्हाट डिवाइसेस डू वी यूज? कैसे मेजर होता है? हाउ डू वी मेजर इट? सर थर्मोमीटर होता है सर, सरफेस थर्मोमीटर, रिवर्सिंग थर्मोमीटर. ओके वेरी गुड. सो टेम्परेचर तो थर्मोमीटर से होता है. सैलिनिटी किससे करते हैं? सैलिनिटी किससे करते हैं? टेम्परेचर इज डन. सैलिनिटी, हाउ डू यू मेजर सैलिनिटी? टेक द सैंपल ऑफ वाटर and measure it. How do you measure it? Device. Selenometer or refractometer. किसे कहते हैं? सेलिनोमीटर और रिफ्रैक्टोमीटर. So what does it do? What does it do? So you take salt water and pass light through it. Salt water लिया and pass light through it. When you pass light through it, because there are salt particles in that, what will it cause? It will cause the light to get refracted. From that you can measure refractometer. Is everyone okay? एक तो ये होता है. दूसरा, there is another. So ये क्या है? Quick measure. Quick measure of surface salinity. How do you measure deep salinity? ये मुश्किल है. डीप सी सैलिनिटी को मेजर करना मुश्किल है. सो व्हाट डू वी डू? वी टेक सैंपल. टेक सैंपल. ठीक है, ये पानी लिया, पानी लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं. क्या लगे हुए? इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं. ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रोड्स. सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव करंट इज गोइंग थ्रू दैट. Current is going through that, and when water is there, is water a conductor of electricity or not? Current. Okay, so you measure the current. So current is there. Now I want to tell you that seawater than fresh water. Seawater has more conductivity. Can anyone tell me why? When current is passed through seawater and when current is passed through normal water, seawater conducts the current faster. Why? Anyone? Any student
of science? Sir, seawater has sodium and chloride, no? And sodium and chloride will ionize, they are in ion form. Ions carry the charge faster. Get that? So free ions will do that. Dissolved salts, perfect. Now tell me, if a sample has more salinity, will its conductivity be higher or lower? If a sample has more salinity, will its conductivity be higher or lower? So, ज़्यादा salinity, ज़्यादा ions, its conductivity will be more. So, can I say from conductivity, can we conclude that the salinity is different? So, do you get that? How do we measure salinity? One is salinometer or refractometer. Other is called the conduction meter. ये दोनों चीज़ें समुद्र में आप लोग नहीं देखते हैं, रिसर्च होती है. तो ये क्या है? दिस इज अ रिफ्रैक्टोमीटर. इसमें क्या डाला? इसमें पानी का सैंपल लिया, पानी डाला, उधर लेंस से देखा, लेट द लाइट पास थ्रू इट, एंड ये अलग से दिखाई दे जाएगा, इधर आपको वो दिखाई दे जाएगा. बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इट इज कैलिब्रेटेड, यू कैन फाइंड आउट. ये क्विक बताता है. दिस विल टेल यू क्विकली अबाउट द सैंपल. सो दिस इज अ हैंड हेल्ड रिफ्रैक्टोमीटर. हाथ में लिया, पानी डाला, सैंपल बता दे. बट वेन वी आर गोइंग डीप, तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे देखे सी में, ये शिप है, शिप पे ऐसे बॉटल लेकर पानी में डालना पड़ेगा. वील हैव टू पुट इट इन द बॉटल. ये सारा सर्किट लगा हुआ है, इलेक्ट्रोड्स लगे हुए, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड करंट वाटर विल पास थ्रू दिस. सो इस तरह से ये सब किया जाएगा, पानी में डाल देंगे. विल पुट दैट इन वाटर. द कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर ऑफ द वाटर कॉलम चेंजेस relative to the depth. Conductivity is directly related to salinity. Temperature delta, salinity data सीधा आ जाएगा इससे. तो आपको क्या करना है? फुल रिसर्च, फुल ओशनोग्राफी रिसर्च से काम होता है. सो कैन वी फाइंड आउट टेम्परेचर? कैन वी फाइंड आउट सैलिनिटी? सबको समझ में आ गया? पूछेगा नहीं, अगर पूछ लिया तो कभी कभी एक बार उसने यही पूछ लिया, एको साउंडिंग की टेक्निक्स बताओ, तो आपको साइंस भी बता दिया. नाउ व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस इज no direct method to find density. डेंसिटी के लिए कोई डिवाइस नहीं है जो आप पानी की डेंसिटी ले लोगे. डायरेक्ट मेथड नहीं है. सरफेस से थोड़ा सा पानी ले लो, सरफेस से यू टेक सम वाटर, यू कैन गेट द डेंसिटी, ओके, दैट्स ओके. बट डीप 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 मेथड टू फाइंड डीप सी डेंसिटी, तो क्या करें? इनडायरेक्ट मेथड. Density D is a function of temperature and salinity. If I know the temperature, if I know the salinity, can I compute the density or not? Can I compute the density or not? So the density of seawater at greater depth is not computed directly, it is computed indirectly. It is computed indirectly. Everyone clear? तो ये आपको ओशन का टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी के बारे में बताया. अब हम क्या करने वाले? हीट एंड सॉल्ट बजट्स ऑफ ओशन. हीट एंड सॉल्ट बजट ऑफ ओशंस. Heat and salt budget of oceans. Get that? So पहले आते हैं हीट बजट ऑफ ओशंस.
Where does this idea come from? Just like atmosphere, even oceans have a long term average temperature. So remember, atmosphere का average temperature कितना है? Atmosphere is around 17. Yes or no? Atmosphere is around 17. When we talk of the oceans, what is it? What is that? Average surface temperature. भी उतना ही है. Yes or no? (17°C). True. The principal source of heat to both is sun, solar insolation. And just like oceans, when we were talking of, just like as we were talking of oceans, atmosphere, when we were talking of atmosphere, did we say that more or less? Did we say that more or less the heat of the atmosphere remains same? Did we take atmospheric heat budget or not? एटमॉस्फेरिक हीट बजट लिया था कि नहीं लिया था? जल्दी बताओ. True. If atmosphere and hydrosphere constantly exchange heat and maintain their heat budgets. Therefore, oceanic heat received should be equal to heat lost. So ocean का heat budget is because of this fact. Ocean का heat budget is because of this fact कि क्योंकि oceans and atmosphere are in connection. Because oceans and atmosphere are in connection, that is why just like atmosphere maintains the heat budget, ocean also maintains the heat budget. That gives the idea to heat budget. What about salt budget? ठीक है. Oceanic heat received. So there is a global balance, but latitudinal variations are possible. Everyone, how many of you remember climatology class about heat budget? There also we said that globally the heat is balanced,
but latitudinally the heat is not balanced. There are heat excess regions, there are heat deficit regions. Similarly, in the oceans, overall oceans heat is balanced. Overall the oceans heat is balanced, but in reality, in latitudes there will be variation. ठीक है, ओशन का तो समझ में आता है. सॉल्ट बजट भी है क्या? इज देयर अ बैलेंस ऑफ सॉल्ट ऑल्सो? इज देयर बैलेंस ऑफ सॉल्ट ऑल्सो? ओशन का तो आई डू अंडरस्टैंड, द टेम्परेचर आई अंडरस्टैंड. Quickly, what and why would we have salt budget? Heat budget, I am okay with that. Heat का budget तो होगा, but why would there be a salt budget? Heat we know is constant, but salt, is that also constant? Is that also constant? So where does this idea of heat and salt budget comes? Heat का तो समझ में आ गया. Heat का I got that. Salt का क्या है? Quickly. Why are we talking of salt budget? Is there anything that we have read? Salt in river should be balanced for constant proportion. देखो कोमल पाटिल जी, सिंपल चीज़ें पिछला पढ़ो. अगर आपको कहना है तो आप सीधा कह सकते हो, इसमें रिवर की मजाक मत करो, ऐसा कुछ नहीं कहा है. प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट proportion, also called as Forshamer's principle. ये कहना है rather than river में बैलेंस होता है. हाँ, तो ये साक्षी ने कहा कि सर ये. So very good. If you are telling me this, so everyone, my answer to all of you is this principle saying that the total salt in the oceans remains same? Or is this principle saying that the major ions, their relative proportion in the salt remains same? Is it talking about total salt is same? Is it talking about total salt is same? Or is this principle talking about the major ion proportion is same? You take a sample of water from Pacific Ocean, you take a sample of water from Atlantic Ocean, the ratio between sodium and chloride or sodium and magnesium will be same. So is it about total salt or proportion? Sir, it is relative proportion. But heat budget is, salt budget is about total budget, total salt. So ये तो पूरा explain नहीं करता. So people who were thinking this, so the idea of a salt budget is a corollary of the principle of constant proportion. ये corollary है. This is not the same. This is not the same. Please do not confuse. Yes, scholars have identified that scholars have identified that the oceanic salt composition hasn't
varied for last 10 to the power 8 years. So almost 10 to the power 8 means 100 million years से कुछ भी change नहीं हो रहा है. Yes, it has not changed. The salt composition has not changed. So oceans have five. पिछली बार आपको डेटा दिया था 5 into 10 to the power 19 kilogram of salt, and this is nearly constant in size and proportion. So proportion भी, relative proportion भी, size भी. So therefore oceanic salt must be in some balance. That is, salt received is equal to salt extracted. Is everyone okay? If you get a question on, heat and salt budget, first you will have to establish this. Everyone with me on this? So proportions are also same, amount is also same. तो ये देखा गया है. That is why this idea of the budget comes. So let's talk about the heat budget first. Heat budget of oceans. We're talking about the heat budget of oceans. Please write down. Heat budget in general signifies that all the supply of energy is balanced. All supply of energy is balanced by equally large loss of energy. Equally large loss of energy. Get that? Or the impact of processes causing heating of ocean water. The impact of processes causing heating of ocean water is equal to the impact of processes causing cooling of ocean water. Mathematically, this can be written as the following equation.
Qs is heat of the sky. QE is the heat of Earth's interior. QKE, kinetic energy of heat generated by kinetic energy of waves, tides in ocean. And O means O for others, which may be missed, but these are the principal sources. What is QB? QB is the back radiation. When we are sending it back, the cooling ones, back radiations. Terrestrial radiation. Get that? Next we have QE. What is QE? E is the evaporative losses. Remember, when water evaporates, evaporation causes cooling, so that will also take that. Then we have QA. So this is coming in contact, we call it the advection loss. Water air interface. So when it touches, so there will be conduction and heat will be lost to that. And QO will always be others. Something that I may have missed. Is everyone okay? Through the heat budget of oceans help in maintaining planet's heat budget. Water movement helps in latitudinal exchange of heat. And last is sea water acts as a thermostat. Acts as a thermostat. Controls the heat distribution and brings climatic balance. So
If there is too much of heat, what will the ocean do? Ocean will absorb it. If there is too much of heat, then what will the ocean do? Ocean is going to absorb that heat. Yes or no? Hide that heat. And if there is less heat, what will the ocean do? Ocean will release that heat. Is everyone with me on this? In that case, the ocean will release that heat. तो ये थर्मोस्टेट का काम होता है. थर्मोस्टेट जैसे आपके घर में एसी में लगा होता है. when a desired temperature is reached, the AC will automatically turn off the compressor, and when the heat is again higher, the temperature, it will automatically switch it on. So ये on off होता रहता है. What will happen? This on off will keep on happening. On off will keep on happening. Is everyone okay? और सरफेस से क्या हो रहा है? एडवेक्शन एंड evaporation, both are taking the heat of the ocean to the atmosphere. Everyone okay with this? So atmosphere से ocean absorb कर लेता है, and when needed oceans will release it to the atmosphere. Everyone clear? Any questions on this? This was your heat budget. Heat budget done. Now we're going for the salt budget of oceans. What is the salt budget of oceans? So just like heat budget, there is a salt budget also. Get that? So please write down. Please write down. Since the oceans maintain a long-term constancy, since the oceans maintain a long-term constancy of oceans maintain a long-term constancy of salts across their expanse. It is believed that the amount of salts entering the oceans minus the amount of salt exiting from the oceans must be equal. Must be minus must be equal नहीं, must be zero. Equal में तो equal means zero. So पिछले में हमने equal किया था, इसमें हम क्या बोले? This we are calling it as zero. Everyone with me on this? So how is it entering? How is it entering? So it is entering in the form of salt St plus salt St plus Sb Sv और क्या लिख सकता हूँ? Sc Sa और जो भी बचा वो So. So where is the salt coming from? Salt हमने पहले भी बात किया. Salt is coming from T means terrigenous.
T stands for terrigenous. B stands for from biotic sources, biogenous salt. Yes. V stands for, we have already talked about, volcanogenous. C, if it is coming from space, cosmogenous. A, if we are talking about, that is human beings, anthropogenous. और जब कुछ नहीं समझ में आता है तो जो भी बचा, एनी अदर कैटेगरी विल बी अदर्स. इज एवरीवन विद मी ऑन दैट? सॉल्ट यहां से आ रहा है, एक्सट्रैक्ट हो रहा है. नाउ द सॉल्ट इज गेटिंग एक्सट्रैक्टेड. सो हु इज कंज्यूमिंग द सॉल्ट? एस ए, एस बी, evaporation E, S P, S O. S stands for salt. S stands for salt. S means salt. Get that? अब A में सबसे पहले salt के साथ कौन निकाल रहा है? हम लोग निकाल रहे हैं. A means anthropogenous. B, not only humans, other species also, plants and animals. So can I say biogenous? E means some evaporation, evaporates, and O means others. If their sum is 0, that means there is a balance. So there can be local variations possible. Local variations are possible. Local variations are possible, but overall there is a balance. Is everyone okay? Ocean heat, salt budget, ocean temperature, salinity. This is what we have done in the class till now. So P is remaining. अच्छा P रह गया, my mistake. P में हम डालेंगे precipitate. P डाल दूं, इधर डाल दूं. When sea water dries, salt precipitates out. At places where seawater has come, and when it will evaporate, what will happen? It will leave behind this thing. Get that? This is generally what every student should know, but one year they asked, long ago, they asked, what is a TS diagram? What is a TS diagram? So P मिल गया सभी लोगों को. I hope that problem is solved. Now we are looking at TS diagram. So लिखें इसको सीधा. अब पूछ लिया तो थोड़ा टेक्निकल है, but I'll try and make it easy for you, and we will see its utility in other areas, not exactly here,
but in other areas. So TS diagram difficult to understand. So when you come to the class, let me make it easy for you. So T here stands for temperature, S stands for salinity. It is a graph. TS diagram is nothing but it is a graph of temperature and salinity. Temperature and salinity and across the various depths in the ocean. That is why we make it. So that is what it is. It is a diagram. Why do we make it? Remember, oceans have water of different densities, and we do not know how to measure density directly. So in order to measure density, we need to check the values of temperature and salinity. उसके लिए अभी आपको मैंने दिखाया CTD, yes or no? So उसमें क्या होता है, salinity को measure करता है और temperature को measure करता है. That device will go inside, and based on temperature and salinity, because salinity is a function of what? If you cool down the temperature, what will happen? Density will increase. If you increase the temperature, what will happen? The density will reduce. Similarly, salt is the amount of salts you add, density increases. Amount of salt you pull out, the density decreases. So these are the two variables which are deciding the temperature, the density of the oceanic water at different depths. So to find that, what do the scholars do? They plot the value of T and they plot the value of S. And because density is a function of T and S, so for every temperature and every salinity value, you will get a particular density. Then you will draw the density lines also. So just like we have isotherms, isobars, for density we have the isopicnic lines. So everyone, what have we understood? What is TS diagram? What is the TS diagram in simple words? What is the TS diagram in simple words? पहले तो आप बताएंगे फिर मैं बताता हूँ. What is a TS diagram in simple words? अविनाश कह रहा TS diagram is density diagram. है भाई, simple words. वो देखो नैना ने लिखा है graph between temperature and salinity. वो देखो कुशाग्र मिश्रा, find density of salt. Find density. Did I say why is TS diagram needed? I said what is TS diagram? It is a simple graphical representation of temperature and salinity values with depth. पहले तो ये है सिंपल वर्ड्स. सर वो डेंसिटी कर्व होता है. अरे बनेगा तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे. डेंसिटी कर्व विच इज इम्पैक्टेड बाय टेम्परेचर एंड सैलिनिटी. नहीं आशुतोष, इतनी अंग्रेजी नहीं बतानी है. इम्पैक्ट नहीं होता, बनता ही उससे है. तो टेम्परेचर एंड सैलिनिटी प्लीज राइट डाउन. इसीलिए बोला कि सिंपल आता है कि नहीं आता. टेक्निकल तो सारे ही घूम रहे हो यहाँ पर. सिंप्लिसिटी इज द मार्क ऑफ क्वालिटी. इंटेलिजेंस सिंप्लिसिटी में है. Only a person who's intelligent enough to understand the concept can simplify it. Yes, please write down TS diagram. TS diagram refers to a graphic representation of a graphic. Rahul Yadav likh lo. Refers to a graphic representation of two main properties of water masses.
Yes, generally, salinity is plotted on the x-axis. Salinity is plotted on the x-axis and temperature on the y-axis. With salinity values ranging from 34 to 36 and temperature values ranging from 0 to 25 at at different depths in the in the water mass in the water mass. Since density is a function of since density is a function of temperature and salinity. Density is a function of temperature and salinity. Thus this graph can also be used to measure to indirectly measure water density at different depths. Water density at different depths. Thus, a TS diagram a TS diagram becomes a means of illustration or a visual tool or a visual tool with three with three attributes: temperature किस पर, y axis, salinity x axis, and density isopicnic lines. डेंसिटी क्या हो जाएगा, आइसोपिकनिक लाइंस. What is an isopicnic line? Curves of equal density. So कर ले. Let's make it 33.5, 34, 34.5, 35, 35.5, 36. ठीक है. ये आपका बॉक्स बन गया.
अच्छा जी, टेम्परेचर क्या रखा था? 0। इसको हमने रखा 0 डिग्रीज। 0 डिग्रीज, 5 डिग्रीज, 10 डिग्रीज, 15 डिग्रीज, 20 डिग्रीज, 25 तक रखा है। 25। इज एवरीवन ओके? हाँ जी। 1.0265। 1.026, 1.0255, 1.025। ठीक है, ये होता है एवरेज डेंसिटी 1.025। यस। 1.027, 1.0275, 1.028, 1.0285. What are these isopicnic lines? Isopicnic lines. Same density. Isopicnic lines. This is a TS curve. Is everyone okay with this? Now, when I say a water mass, what do I mean by a water mass? Water mass is somewhere, it is not the ocean, but a chunk of the ocean which will have a particular temperature and a particular salinity to get to a particular density. Is everyone okay? True? Everyone okay? So I have this ocean. Ocean is here. Ocean is here in the depth. Now, how do we use TS diagram? How do we use TS diagram? How do we use TS diagram? So, don't draw this. I just want to explain. This is oceanic water. What is this? This is oceanic water. Remember, there is whole atmosphere, and atmosphere can be divided into smaller masses called air masses. Yes or no? So suppose, imagine, uh, this is Antarctic ice. What is this? Antarctic ice.
when this melts, when the Antarctic ice melts, yes, so will the water come here, Antarctic water come here or not? Everyone please tell me, Antarctic water, will it come here or not? Yes. Is it cold, denser and heavier than the surface? So what will be the tendency of this? What will be the tendency of this water? This is not entire ocean, this is Antarctica. So Antarctica. So what will be the tendency of this cold, heavy water? Cold, heavy water. Antarctic ice melt is happening. जल्दी बताओ. What will be its tendency? Sir, ये ठंडा है. Its tendency will be to sink. Sink. Which force? Which force will cause it to sink? Which force will cause it to sink? More dense? Gravity. Gravity will pull it down. Yes or no? So what kind of water will I have at the bottom? At the bottom, at the bottom, at the bottom, at the bottom. क्या हो गया मेरे पास? ये पानी इकट्ठा हो गया. इस पानी को बोलते हैं AaBW. AaBW. Is everyone okay? Clear? ठीक है. Now, AaBW, Antarctic bottom water. Why has it gone? It has gone down. यहाँ पर think about it. This is Iceland. Iceland. Greenland. Yes or no? Now in Greenland, what is happening, everyone? In Greenland, what is happening? Greenland में the water is reaching. Warm water from Gulf Stream and North Atlantic drift is reaching Greenland, and it is very, very cold. What will happen to the surface water? On the oceans there is Greenland, और Greenland में बहुत ठंडा पानी है. So the water is reaching there and it is becoming very, very cold close to Greenland. What will happen to the surface water? So I am here, everyone. I am where? I am here in Greenland. Surface water is reaching there. Salty surface water has reached here. What will happen to that water? Quickly. It becomes cold, very cold, or cold हो रहा है, और cold हो रहा है. The temperature, it is winters. The temperature of the wind is -10 degrees Celsius. What will happen to the surface water? जल्दी बताओ. What will happen to this salty surface water? 34 है ना?
what will happen to this salty surface water? Quickly, what will happen to this salty surface water which is close to Greenland? The temperature outside is minus 10 degrees. अंकित डेंसिटी इंक्रीज, नशे में मत रहो, पानी ठंडा हो रहा है. सब लोग जो लिख रहे हैं सब लोग फ्रीज लिख रहे हैं, सब लोग फ्रीज लिख रहे हैं. पानी क्या होगा, इसलिए मैप दिखाया. पानी जम जाएगा. आइसलैंड के पास क्या होगा, पानी जम जाएगा. यहां पर क्या हो रहा था, अंटार्कटिका के पास क्या था, अंटार्कटिका के पास हम लोग कह रहे हैं ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है. व्हाट इज हैपनिंग, glacier melt is happening. Why is glacier melting? Because it is, say for example, summers in the southern hemisphere, but northern hemisphere में क्या हो गया, northern hemisphere में it is winters. In winters what will happen to the water, water will freeze. ये पानी फ्रीज कर गया, कर दें फ्रीज, कर दें फ्रीज. surface water gets frozen. Surface water freezes in winter. Is everyone okay? But there is a problem. There is a problem. When seawater freezes, the ice that comes out of it is not salty. What does it mean? If you take salt water and freeze it, if you take salt water, seawater, and freeze it, the ice that is created is not salty. Ice is not salty. What happened to the salt? What happened to the salt? Salt को क्या हो गया? Guess, guess. फिर वो पानी में रहेगा. Salt does not freeze. This is called brine rejection. साइंस बता रहा हूं, साइंस. पानी में रह गया. एवरीवन, इस एरिया की सैलिनिटी को क्या होगा? Will the S increase or not? इधर सैलिनिटी बढ़ गई, इधर सैलिनिटी बढ़ गई थी, और इधर क्या हुआ था, टेम्परेचर कम हो गया था. Because temperature was low, so density increased, this water started going down. Will this water which has become saltier, will it become denser, and will this also start going down? Yes or no? Denser. ये क्या है, ये dense है. Everyone okay? Both places water is going down, but in one case it is T driven, in other case it is S driven. And when this water goes down, remember, water will not mix because it has different properties. And out of Antarctica and this one, which is more colder and denser, Antarctica is more colder. So what will happen when they come in contact? ये आएगा और ये उसके ऊपर लेट जाएगा. ठीक है. Both are heavy waters, both are denser waters, both have gone down. But tell me, what will be difference?
What will be the difference between them? T and S. T and S will be different. Yes or no? T1, S1, T2, S2. So in deep oceans, water exists as air or water masses. In deep oceans, water exists as water masses. Each water has its definite characteristic properties. T and S values. True or not? Yes. And the denser water mass lies at the deepest level. अब proper science आ रही है. This is proper science coming to you. This is proper science coming to you. एक मैंने अंटार्कटिका साउथ पोल से पानी को नीचे भेज दिया बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. दूसरी जगह पे क्या किया? आइस बना, सरफेस पे आइस. When salt water turned into ice, what happened? It rejected the salt. Salt remained in water, more salt. So as a result, what happens? This starts going down. This process of sinking is called downwelling. Downwelling. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? Downwelling. Is everyone okay? With me? Any doubt? Please ask. Are we clear? Done or not? No, I'm a scientist. I want to know which water has come from Antarctica, which water has come from Greenland, and I have means to go deep and get the samples. Is it possible to find out which water is Greenland water, which water is Antarctica water? नहीं सर, पानी तो सब मिल जाएगा. अंकित भाई सवाल मत पूछो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? सो विच वाटर विल हैव मोर सॉल्ट, T1 और T2? तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? क्लास को दोबारा देखो, तुम बेसिक पढ़ो, तब जाकर आएगा. हाँ जी. सो एवरीवन, हाउ कैन आई फाइंड आउट, और इज इट पॉसिबल टू फाइंड आउट? और सर फाइंड कैसे करेंगे? सर पानी है वो तो मिल जाएगा. Is it possible that someone can find which water is Greenland and which water is Antarctic? Quickly क्लास खत्म भी करनी है बच्चों, इसमें देर नहीं करो. हाँ या ना, नहीं तो मैं आगे बता दूंगा. और जो ऐसे ही क्वेश्चन आता है तो आई नो स्टूडेंट के क्वेश्चन को मैं ब्लॉक नहीं कर रहा हूँ, एंड आई विल नॉट अलाउ देम टू ब्लॉक द क्लास. इज इट पॉसिबल टू फाइंड आउट द वाटर्स और विल दे मिक्स? इज इट पॉसिबल अंटार्कटिका का वाटर और ग्रीनलैंड का वाटर कहीं पर भी ओशन में मैं चेक करूंगा, सो एट द बॉटम, इज इट पॉसिबल टू फाइंड इट और विल दे मिक्स? इज इट पॉसिबल टू फाइंड इट और विल दे मिक्स? इज इट पॉसिबल, येस और नो? कि भाई ये पानी तो ग्रीनलैंड का पानी है, ये पानी अंटार्कटिका का पानी. इज इट पॉसिबल टू फाइंड इट? नहीं सर, इट विल मिक्स. ओके. So the answer is, it is 100% possible to find it. It will not mix, इसीलिए तो बनाया. That is why we said नहीं mix करेंगे. They generally will lie over there. So अगर मुझे अंटार्कटिका के पानी का T और S पता है, वही वैल्यू वाला पानी जहां मिलेगा, तो I can be 100% श्योर ये कहां का है? अंटार्कटिका का है.
Yes or no? True or not? Is everyone okay with that? So दोनों का ये रहेगा. But they can mix also. Sir, how can they mix? Okay, everyone. So there is a glass. In this glass, I have water and oil. In this glass, I have water and oil. Can they form layers? Can layering happen? Can layering happen? I have a mixture of oil and water in glass. Can layering happen? Can they form distinct layers? Yes, sir. But they are not forming right now. How is it possible? Sir, if you leave them undisturbed, they will form layer. They will form a layer. Is everyone okay? They will form a layer. But if you keep them shaking and disturbed, will they ever form a layer? Will they ever form a layer if I keep on shaking them, shaking them, shaking them? No, sir, they will not form a layer if you keep on shaking them. They will not form a layer. Yes or no? So, these two air masses, if they are in layers, what does that tell us? There is stability. There is stability. There is stability. If they are unstable, then what will happen? Mixing will happen. Do you get that? So when I asked you a question that Atlantic water and Antarctic water, can we identify them? Yes, we can identify them. So why I was talking about this? Because the purpose of TS diagram, TS diagram, TS diagram helps in identifying water masses in oceans. Each water mass has specific P and T value. Is everyone okay? Done. तो ये मेरा क्या निकला? This is my ये वाटर मास या इधर भी कर सकता हूं मैं, इधर होगा ना पिक्चर सैलिनिटी, ये ज़्यादा सलाइन होगा. Okay, so this will be BW NA BW because it will have its characteristic temperature and pressure. So मैं किसी भी एयर मास वाटर मास को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि नहीं? Different water masses are there in the ocean. In the ocean there are different water masses. So every water mass will have its characteristic temperature, and this is the temperature and the salinity value. Yes or no? T and S value से मिल जाएगा कि नहीं? So first is it tells where your mass is. Is everyone okay? Is everyone okay with this? ठीक है? Now it also tells about PS diagram also tells about water mass. मैंने कहीं एयर मास तो नहीं निकला? Water mass stability
और instability. वाटर मास स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी ये भी इससे पता चल जाती है. So how? You don't have to worry about it. So it tells us whether water masses are mixing or not. And if water masses are mixing or not, this tells us about deep sea current, upwelling, downwelling processes can be ascertained. The question came, what is TS diagram and what are its uses? So on a TS diagram, you can plot a particular water mass itself. So ये properties उस water mass की है. So in that, and whether the water mass is stable or unstable, whether mixing is happening or not, that is what we can find out. And that leaves me to currents. So tomorrow we are going to start with currents. We are starting with ocean currents. I have a request to all of you. फिर से कह रहा हूँ NCERT से पढ़ लो. NCERT से पढ़ लो, it will help you a lot. So I don't expect you to know much about all this TS diagram. ये तो मैंने कुछ आपको बताने के लिए दिया था कि डीप ओशन में वाटर मासेस होते हैं. यूपीएससी इज आस्क्ड अबाउट वाटर मासेस क्या होते हैं. सो नाउ यू नो व्हाट आर वाटर मासेस. दैट वाटर deep inside the ocean exist as three-dimensional huge volumes of their different temperature and different salinity. Different temperature, different salinity and different density. Density 1, density 2. So, सबकी अलग अलग डेंसिटी होगी and they are moving depending upon their stability and instability. Is everyone okay with this? So this was just to give you some clarity of some deep sea motions. Once we understand currents, तब और भी चीजें समझ में आएगी. So today we've ended all aspects of salinity and some technical questions of TS diagram also. Please watch the video if you are facing any issues in this. I'll see you at 4 o'clock. I'll be talking about settlements in the second class. Thank you. Jai Hind.